the legendary Milkha Singh ji had only charged 1 rupee for giving the rights of this film. True. A 1 rupee note from 1960. Soram Kapoor had charged 11 rupees. True. She refused to take money. Okay. So I said नहीं हमारे में वो शगुन की बात होती है तो 11 रुपए तो लीजिए. Is it true that there were various actors approached and there are a list of people like Abhishek Bachchan, Akshay Kumar, Amir Khan, Hrithik Roshan, Ranveer Singh who were approached to play the lead Milkha Singh? A lot of names were thrown at me. Lot of names the media build up. अच्छा. अपने आप फिल्म को कास्ट करना शुरू कर दिया. But I was very keen on Farhan. नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओमप्रकाश मेहरा और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा में देख रहे हैं. 12 जुलाई 2013 आई एक ऐसी फिल्म which was not just a biopic. ये कहानी थी एक फौजी की जिसने दूध मिलने के लालच में दौड़ तो लगाई, लेकिन उस दौड़ ने सिर्फ उनकी नहीं हमारी भी जिंदगी बदल दी. He inspired all of us. This is the story of the flying Sikh. मैं बात कर रही हूँ about भाग मिल्खा भाग, जिसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं and wow, we really feel old. But what a film. Today on Bollywood Hungama with me, Urmin, I have the very wonderful Rakeysh Omprakash Mehra. How are you doing? All well. Namaskar, pranam, adab, sat sri akal. Before I start this interview, आपने मुझे एक task दिया है and it's so difficult. He's asked me not to use G after his word. पर राकेश जी ये बहुत difficult. You can call me Rom. Rom. I like Rom. Yeah, so my entire cast and crew calls me Rom. So Rom, I think the best way to start this interview is that I have a few facts, or probably they are not facts, that I have heard of, and we'd love for you to tell us if they are true or false. Okay. Yeah? I'll try my best. Okay. My first statement is that the legendary Milkha Singh ji had only charged 1 rupee for giving the rights of this film. True. Okay. In fact, I'll add to that, and the 1 rupee which he accepted, and so we got a 1 rupee note from 1960, printed in 1960, and it had a special significance because that's when he was running the finals at the Rome Olympics. Oh, wow. So 1960 का एक नोट कहीं से ढूंढ के लाए और क्या बात है, क्या बात है. Soram Kapoor had charged 11 rupees as a shagun fee for her role. True. Okay. Would you like to add something? Please feel free to add anything you'd like. When she heard the story and she loved the part, and more than that, she loved the entire vision, the story, and the attempt. She refused to take money. Okay. So I said नहीं हमारे में वो शगुन की बात होती है तो 11 रुपए तो लीजिए. The next statement is कि फिल्म शुरू होने से पहले there was a fun actual race between Milkha Singh ji and Farhan Akhtar. I distinctively remember Farhan would train in the morning, and as the training grew, it went. We were training in Priyadarshini Park. It has a 400-meter track, Okay. a tartan track. You know, the synthetic tracks which are red in color. So that was important to train upon. And then one day Milkha sir dropped in, and so jokingly I said, "Ek race ho jaye." And it was not a race. In fact, it was amazing to see them take a round, jog around. Also, I had seen a lot of his reels. Okay. Of the archival reels in Right. black and white from Films Division, from Sport Authority of India, from International Olympic Association. You'll be surprised from Australia, the AA, which is Australian Athletics. They all helped me out, and even the British movie BFI, British Film Institute, Yeah. and Movie Tones. They had preserved the races for Cardiff, the Commonwealth races, and then of course the Rome Olympic Association, and it was
So to understand his style, I must say, even when he came to Priyadarshini Madan, his style was intact. And only Farhan can tell you what he must have felt like. It's very difficult to explain. Speaking about the Rome Olympics that was seen in the film, the 1960 Rome Olympics, is it true that the shoes that Farhan Akhtar is wearing was actually gifted by Milkha Singh ji? The spikes. Yeah, the So spikes. these are the Adidas spikes which he wore for the Rome Olympics. Yeah. And I got to know that in a auction for an NGO, they were auctioning some sports memorabilia. धोनी ने जिस बॉल को छक्का मारा था वर्ल्ड कप जीता था लास्ट बॉल पे जी. सचिन का बैट जिससे उसने कुछ 50 सेंचुरीज कंप्लीट की थी वो वाली इनिंग का ऐसे ऐसे कई चीज़ें थी और उसमें मिल्खा सर के स्पाइक्स भी थे स्पाइक्स मतलब जो रनिंग शूज होते हैं जिसमें कीलें होती हैं तो आई वाज वेरी कीन टू एक्वायर दैट and we acquired it in the auction and then we gifted it to Milkha sir कि आपके spikes वापस आ गए. Wow. तो हम चंडीगढ़ गए थे और फिल्म को अनाउंस कर रहे थे and as a very gracious gesture, that's something which he possessed so close to his heart, he gave it to Farhan कि बच्चे अब तू पहनेगा ये. And it was a moving moment. It's fine till now. That's the story of the spikes. But we went to a hotel rooms to change. We were going to take the evening flight back. And Farhan just called me in my room. He says, you know what? They fit me perfectly. इतना सा भी मतलब फर्क नहीं था. मैंने कहा, now you've stepped into his shoes. चलो फिल्म बना. इतनी प्यारी कहानी. Okay. Is it true that there were various actors approached and there are a list of people like Abhishek Bachchan, Akshay Kumar, Amir Khan, Hrithik Roshan, Ranveer Singh who were approached to play the lead Milkha Singh? There's nothing new about any feature film, if you really ask me. We all go through the casting exercises as such. But वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. और जो जो भाग्य लेके आया उसको वही मिलता है. And it was a very extremely challenging role to portray. It was a very, very challenging project to put together because you are making a film about partition where most of the time there is a lot of childhood of Milkha Singh. Yeah. It's a film where the main protagonist is an athlete. हमारा हीरो जो athlete है और इंडिया में शायद ही किसी को एथलीट लोगों के नाम याद हो. हमारा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग. देयर वाज नो नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ द फिल्म. यू नो देयर वाज नॉट नो हीरो नो विलन. देयर वाज नॉट यू कैन नॉट टर्म इट एज अ रोमांटिक स्टोरी. इट इज ड्रामा यस. इट्स स्पोर्ट्स यस. ऑल दैट. सो पुटिंग द प्रोजेक्ट टुगेदर was extremely difficult, and I didn't want to compromise on who will play Milkha at all. In fact, so a lot of names were thrown at me. A lot of names the media build up. अच्छा. अपने आप फिल्म को कास्ट करना शुरू कर दिया. But I was very keen on Farhan, and in my heart I knew that I should go with him, and we went with him. And he had a twinkle in his eyes when I offered the role. He understood because he is a director, writer himself. He understands the process, what goes in a director's mind. But everybody around said, Arey, what are you doing? You're taking Farhan Akhtar for this part. He's the rock-on star. You know, the पब्लिक परसेप्शन जो हम बोलते हैं ना ऑडियंस को लगता है कि ये एक्शन करता है ये रोमांस करता है यू नो ये बहुत ट्रैजिक हीरो है ये सारे लेबल्स जो हैं तो ऐसे ही फरहान का था कि वो तो रॉक स्टार है एंड अर्बन बॉय है दैट इमेज यू नो तो बट आई फाउंड
extreme similarities between Farhan's eyes and intensity and Milkha sir's eyes. So I put both the photographs together. Right. And I told my team, spot the similarity. That's lovely. Exercise हुई थी एक. अच्छा. A lot of people got it right. Yeah. But the eyes definitely, they're bang on, just exactly the same. The feel comes through the eyes and the emotions. One of the most important parts of performances and acting is people who can act with their eyes, and it tells you, are you playing the part or have you become the part? Oh. And it's very important for me, for any film I do, that any actor in that film should become the part and not play the part. Moving on, is it true or false that Farhan Akhtar actually grew his original hair because he didn't want to wear a fake turban? Absolutely true. Yeah, and it's वो fake ही होता है. Right. फिल्म का जो टाइटल है भाग मिल्खा भाग was never actually spoken by Milkha ji's father, and this was adapted because of the story of the film. Yeah. So in fact, in this very room, once Milkha sir came before the film, Okay. and he said, बच्चे ये भाग मिल्खा भाग मतलब कैसा, ऐसा तो नहीं है कि भाग रहा है मिल्खा, क्या बोल क्या है, आपको सही लग रहा है? Used to call me बच्चे. So I said, you know, I remember listening to you that जब आप 12 साल के थे और एथनिक वायलेंस चल रहे थे, 1947 का पार्टीशन चल रहा था, और आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, 2000 people in the village were massacred. What your father said was भाग पुत्र भाग, निकल, भाग पुत्र भाग. तो मेरे वो हो गया था, तो वहाँ से लिया मैंने, और फिर पहला सीन लिखा कि वो रोम ओलंपिक्स में है एंड ही लीडिंग द रेस अप टू 200 meters, which is a fact. Right. And then he did a technical mistake of looking back कि मैं कितना आगे हूँ, कुछ ज़्यादा मेंटेन कर पा, उसमें 3 लोग आगे निकल गए, बट फोटो फिनिश में ही came fourth. So I said that is a seminal point. Only 2 times I've seen tears in his eyes. Once when he talks about the massacre of his family, his mother, father, and second time when he said कि जब मेरे हाथ से गोल्ड मेडल गिर गया था. 2 बार मैंने उनके साथ, और कुछ हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग है, 3-4 हजार घंटों की रिकॉर्डिंग उनके साथ. Only twice उनको मैंने, अदरवाइज हम हमेशा ही वो जोकिंग, हंसते रहते थे, खाते पीते थे. क्या ये सच है कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट को करीबन 2.5 साल लगे? स्क्रिप्ट की कहानी भी अनोखी है. मेरे को एक उनकी बायोग्राफी मिली मिल्खा सर पे, और वो पंजाबी में थी, गुरमुखी में, जो मुझे समझ नहीं आती. तो मैंने, मेरे दोस्त के अंकल हैं जिनको गुरमुखी आती है, तो उनको दी पढ़ने के लिए. वो अगले दिन आए, उन्होंने बोला कि बहुत प्यारी कहानी है, और वो खुद पार्टीशन के विक्टिम थे, तो ये आपको बनानी चाहिए. तो मैंने कहा मेरे को समझ में तो आती नहीं, टूटा फूटा उन्होंने थोड़ा मुझे उनके लाइफ का ऑर्डर समझा दिया. सो देन आई कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज राकेश शर्मा. ही हैज बीन अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड manages a huge sports management concern today, and has written Will's books of record, the first one. मैंने कहा you know Milkha Singh? And he says yeah, I know him personally. तो मैंने कहा यार मिलवा दे. तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला आप आ जाओ चंडीगढ़ मिलना है. तो आई वेंट देयर, सुबह की फ़्लाइट थी और शाम 5:30 बजे वापस आना था. वेंट देयर इन द मॉर्निंग. तो पहले तो खाना पीना, फिर उसके बाद और खाना पीना, तो एकदम प्योर पंजाब का वेलकम हुआ. उन्होंने आपकी पिक्चरें देखी थी? नहीं, उन्होंने नहीं देखी थी. अच्छा. जीव मिल्खा सिंह, his son had seen रंग दे बसंती, and daughter सोनिया had seen it. अच्छा. फिर मैंने कहा अपने बारे में कुछ बताइए, ये सब. थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई, 1-2 घंटे बीत गए और फ्लाइट का टाइम हो रहा था. तो मैंने कहा मेरे को आप 5 मिनट का वो दीजिए. मैंने बॉम्बे फ़ोन किया, मैंने बोला मैं आज नहीं आ रहा. एंड वी स्टार्टेड टॉक. आई डिडंट इवन हैव क्लोज्ड, सो आई वेंट टू सेक्टर 17 मार्केट. वो खादी ग्राम उद्योग था, वहाँ पे कुर्ते पजामे लिए, ब्रश लिया, वापस होटल. आई स्टेड देयर फॉर 7 days.
I didn't come back. Just listening to the story again and again. And on the 7th day, I decided कि ये फिल्म स्क्रिप्ट तो दे दी है मेरे को. बट उस रात को पहली रात को जाके मैंने पहला सीन लिखा था कि रोम ओलंपिक्स में जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं उनको अपना पास्ट, द डार्क पास्ट, वो दिखाई देता है. तो जब आप लिख रहे थे क्या पहले से ही आपके ध्यान में यही चल रहा था that this is how you want the film to be edited? Because it could have been a straight film, but the fact that, you know, every story that he goes through has got so much of backstory, and then the back and forth has made it even more dramatic. I'm a student of cinema at the end of the day, and where you learn with every job. And editing is born out of cinema. Yeah. Photography is not. Right. Acting is not. It's from theatre. Yeah. Photography is from art, from paintings. Music is from music. But एक editing ही ऐसा discipline और art है जो जब सिनेमा शुरू हुआ तो editing शुरू हुआ. उसमें आप खेल सकते हो with time, space, and all that. And जब आप अपनी memories में जाते हो और आप सोचते हो यार बचपन में स्कूल में मेरे साथ ऐसा हुआ था या ऐसा हादसा हुआ था या ऐसी अच्छी बात हुई थी, तो you are actually in your mind. So बैक एंड फोर्थ इससे पहले मैं रंग दे बसंती में कर चुका था जी. और आई लव दैट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो एंड प्लस देन वी हैव अ मैजिशियन ऑफ द एडिटर एंड शी इज P.S. Bharti. She is also the creative producer and producer of Bhaag Milkha Bhaag. Okay. So she had won a national award for Rang De Basanti and all the awards for Bhaag Milkha Bhaag, also Filmfare, IFA, Zee, everything. She understood the attempt. Yeah. And that's the only way I felt the story can be told more interestingly. ये बताएं that how challenging was it for you to take a call that, you know, we can go a little far from the real story for the film effect? 100%. You have to dramatize life. Yeah. तो जब आप किसी की कहानी और किसी की सच्ची कहानी, किसी की जिंदगी की कहानी, जिसको हम बायोपिक बोल देते हैं एक लाइन में, बट उसमें लाखों करोड़ों इमोशंस छुपे होते हैं, आकांक्षाएं छुपी होती हैं, फेलियर्स छुपे होते हैं, सक्सेसेस छुपे होते हैं, लव स्टोरीज होती हैं, हेट्रेड होता है, रिवेंज होता है. तो ये सब था यहाँ. आपने जैसे कहा that, you know, the biggest similarity that you found in Farhan Akhtar were the eyes, and I think what a fine actor. Who is it true that he also worked for 18 months for that body, for the rigorous training that he had to do? एक scene मैं आपको कहना चाहूँगा, and then this also makes me feel that, you know, it just shows the beautiful connectivity that was there and how he's actually such a talented athlete. जब वो पहली बार दौड़ लगाते हैं select होने के लिए, और आफ्टर वो दौड़ वो दूध पी रहे हैं, and I was watching his hands very closely and they were shaking. It was the fact that, you know, that continuity was so perfect. You actually believed that वो ही दौड़ लगा कर आए हैं, उन्होंने ही सब किया है. तो after he came on board, what are these small things जो आपको और भी ज़्यादा positivity मिले जा रही थी about Farhan Akhtar playing भाग मिल्खा भाग? Like I said before, there is a difference between acting and performances. Farhan did not play the part; he became the part. Yeah. आपने शायद मेरे से ज़्यादा आप जानती हैं फिल्म के बारे में, because you have found something in a scene which is there. Yeah. And because वो कुछ 10 किलोमीटर की रेस हुई थी, तो आपके हाथ पैर कांप जाते हैं उसके बाद. सीधे तो नहीं पी सकते हैं दूध, तो वो the fact that he did that. तो all that happened. So all the nuances were there. And athletics एक ऐसा स्पोर्ट है कि जिसमें आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भागना है. उसमें अगर 200 मीटर या 400 मीटर की रेस है तो एक टाइम पे आप 100 मीटर तो भागेंगे, फिर कैमरा कट बोलेगा. कभी कभी पूरा 400 का भी हमने शॉट लिया है.
तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी थी, उसको आप फेक नहीं कर सकते। आपको लगता है कि हर कोई भाग सकता है, हम सब भाग सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, हम सबको दौड़ लगानी आती है, बट उसका जो डिसिप्लिन है जो आपको एक लेवल पे लेके जाता है वो अलग है। जितने भी यूनिवर्सिटी चैंपियन थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से थे, साउथ अफ्रीका, जापान, इवन अमेरिका, उन सबको मैंने इनवाइट किया था टू रन विद फरहान। ओके, सो दे फॉर द कैन रेस, आल्सो सो ऑब्जर्व। हाँ, और फरहान को बोला था देख इनको कम से कम 20 मीटर तक तो मत छोड़ना, ये सब आगे चल के अपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया उन लोगों ने। मैंने कहा इनको तब तक नहीं छोड़ना तो वो सही लगेगा। तो वो एक्चुअल वो जो एफर्ट दिख रहा है वो एक्चुअली एफर्ट है कि हाँ, और उसके बाद वो पीछे छोड़ जाते थे क्योंकि दे आर प्रोफेशनल एथलीट्स, but all that there's a lot of hard work in the training. How challenging were shooting the races? It was like I love sports, so जिस काम में मज़ा आने लगे और जो काम करते हुए बहुत मज़ा आता है वो तो चैलेंजिंग थोड़ी होता है, वो तो गिफ्ट होता है, वो तो लग रहा है यार मैं ये कर भी रहा हूँ, इसके पैसे भी मिल रहे हैं मेरे को, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है। Rom, ये बताएं that apart from Farhan Akhtar, there are such wonderful characters, such wonderful actors, जिनके बिना ये फिल्म अधूरी है। तो मैं कुछ कुछ ऐसे ही एक्टर्स का नाम लेना चाहूँगी जिनको सही मायने में वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिकॉज द फिल्म वॉज इनकम्प्लीट विदाउट देम। सबसे पहले डेफिनेटली दिव्या दत्ता, जिन्होंने स्त्री की भूमिका निभाई। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस कैरेक्टर, अबाउट दिव्या? दिव्या इज अ गॉडेस, और दिव्या की फोटो लगा के पूजा करनी चाहिए हर एक एक्टर को। जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनकी रोज सुबह आरती उतारनी चाहिए कि हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दो। जब मैं दिव्या दत्ता को मिला था ये इससे पहले हम एक फिल्म बना चुके थे, दिल्ली 6, दिल्ली 6 in English, and she played the role of Jalebi in that, which was a very different role. Correct. So when I met Divya, I said, Divya, I want you to hear a story and it is the lead role. जरूरी नहीं है कि हीरो हीरोइन, आपकी लाइफ में आपकी हीरोइन आपकी माँ भी हो सकती है, राइट, आपकी बहन भी हो सकती है, बिल्कुल, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपका हीरो आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपके आपके स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, यू नो, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है। तो ये जो माइंडसेट है हमारा कि हीरो हीरोइन का हमेशा मतलब दे हैव टू हैव, प्यार का रिश्ता तो है, होना ही चाहिए, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द रोमांटिक एंगल. So I told her that's not important because truly my heroine in my life is my sister. And she said, कैसे मतलब ऐसा तो कोई मानता नहीं है, ठीक है हम फिल्म पर एक बनाते इमोशन, हैं, फिल्म आई, फिल्म चली, फिल्म रिलीज हुई. Then she told me, now I know what you were saying when you told me that one day. एक सीन था कि दिव्या राख से बर्तन मान रही है और फरहान आते हैं सूट में, मिल्खा और चश्मा लगा के, एंड शी सेज कौन, क्योंकि वो पहचानती नहीं, वो सूट बूट में है, वो बहुत हाँ जी, और वो उनको उनके बुंदे देता है वापस। वो सीन ऐसा था नहीं हमारे पास, वो हम सब हमने वहीं लोकेशन पे इम्प्रोवाइज किया, कौन, ये सब, ये शीशे में देखना, वो सब। तो राख बनाने के लिए आर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ कोयले जलाए थे, क्योंकि मैंने कहा वो राख दिखनी चाहिए। आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हम पहले राख से ही बर्तन साफ करते थे, सब कुछ करते थे, तो वो जो अंगीठी का कोयला होता था उससे, एंड वो सीन विन रेडी हो गया एंड वी डिड द सीन एंड शी वाज डूइंग, कैमरा ऑन, एक्शन बोला, शी केप्ट डूइंग इट, प्लेड द फर्स्ट शॉट गॉट ओवर एंड शी केप्ट क्वाइट एंड was washing her hand and her hand was totally burnt. वो गलती से वो जलते हुए कोयले राख में रह गए थे, but she didn't cut the scene, she didn't stop it, she didn't say ये क्या कर रहे हो, ये कुछ किसी को कंप्लेन नहीं किया, हो जाती है गलती, चलो आगे बढ़ते हैं। That is दिव्या दत्ता for you. पवन मल्होत्रा, ये एक और कैरेक्टर है जिनके बिना ये फिल्म अधूरी है। अगेन द इंटेंसिटी इन विच ही डिलीवर्स डायलॉग्स एंड उनकी केमिस्ट्री जो रही फरहान अख्तर के साथ, आई मीन टुवर्ड्स द एंड सच एन इमोशनल सीन जब वो खुद
पवन जी पर डाल देते हैं सारे अपने मेडल्स. टेल अस व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस फाइन एक्टर. Pavan Malhotra is will go down in the history of Indian cinema and world cinema as one of the finest actors who was ever there. So उनका कैलिबर जो है और उनका पोटेंशियल जो है वो इज एज डीप एज द ओशन. आप जितना गोता मार सकते हो और जो निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है. पवन ने मेरे को बहुत हेल्प की क्योंकि उनकी पंजाबियत जी. बहुत ओरिजिनल है. वो समझते हैं उस मिलियू को, उस एटमॉस्फेयर को. तो वो आके मेरे कान में विस्पर कर देते थे कि ये ऐसे नहीं होता, इसको ऐसे होता है, इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं. और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है. तो बहुत बहुत पवन ने तो मतलब मेरे को ही डायरेक्ट कर दिया. कोई ऐसे कैरेक्टर जो आपके बहुत फेवरेट रहे जब आप इस फिल्म को वापस देखते हैं? I mean, I'm sure that, you know, it's so hard to choose. No, it's hard to choose whether it was Yogaraj Singh who played the coach and the latter part of who took Milkha to the Olympics. There are two extremely special mentions. One is Art Malik. Oh. Yeah. Art का मैं दीवाना तभी हो गया था जब मैंने उनकी पहली फिल्म देखी थी True Lies with Arnold Schwarzenegger. He was the main villain. Right. Then Passage to India and his theatre work in West End and his Shakespearean theatre work is great. So I called him and I said, ऐसा कुछ कर रहे हैं. And his parentage is from Pakistan. Okay. As such. So मेरे को वो connect भी मिल रहा था क्योंकि where Milkha has come from is now in Pakistan, right. The village. So I met him in London and we started speaking, and he had worked with one of my favorite directors ever, God director David Lean in Passage to India and all that. Sir, चले वाले घर दिखाए David Lean का. मैंने कहा एक दिन मैं ये फ्लैट लूँगा देखते हैं. तो Art Malik brought so much to the part of Milkha's father. And who is the second? Second, by far my most natural actor whom I have ever worked with. Forget Bhaag Milkha Bhaag. रंग दे बसंती, Delhi 6, अक्स, मिर्जिया, जो भी तूफान, जो भी काम किया, that was Japtesh. Japtesh played the young Milkha. Oh. We had auditioned at the count of 2,800 children. And I was not feeling correct. I said मेरे को मेरा मिल्खा नहीं मिल रहा है क्योंकि जो उसका बचपन है वही फिल्म है. wow. उसको सारे घाव बचपन में ही मिलते हैं. तो पंजाब में हम लोग लोकेशन पे थे और ढूंढ रहे थे और ऑडिशंस भी चल रही थी, मिल नहीं रहे थे. तो हमारे जो केटरर थे जो खाना खिलाते हैं हमें शूटिंग पे जी, तो डब्बे वब्बे लेके आए. लंच टाइम हुआ और उनके साथ उनका लड़का भी आया जो डब्बे में खाना वाना हमें खिला रहा था. सो आई लुक्ड एट हिम and I spoke to him for 2 minutes and I told my team, meet Milkha Singh Junior. Immediately you could, उससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं जब कोई मिलता है. Yes, because it was a part Farhan Akhtar and part the younger version film also, which was so important. It was, yeah. If you see the film ends with both of them are running together. Yeah. Rakesh ji, I think another hero of the film has to be the music. 7 गाने बहुत डिफिकल्ट है ये चूज करना. पर ये बताया दैट बिकॉज यू हैव एंड यू हैड वर्कड विद रहमान सर फॉर दिल्ली 6 एंड रंग दे बसंती, वाज ही आल्सो एन ऑप्शन फॉर भाग मिल्खा भाग? ये कोई जनरल स्टोर थोड़ी है कि आइटम लगे और ऑप्शन आपको ढूंढ रहे हैं. नहीं, कॉम्बिनेशन भाग मिल्खा भाग इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, कहानी शुरू करने से 8 महीने पहले ही मैंने शंकर को कहानी बताई, मतलब कास्टिंग वगैरह प्रोडक्शन से पहले. तो मेरा बहुत मन था शंकर एहसान लॉय के साथ काम करने का. मैं उनको बहुत मानता हूँ और बहुत प्यारा रिश्ता है और रिश्ता बहुत पुराना है. जो मैंने पहले ऑडियो विजुअल बनाया था इन मिड 80s में एडवर्टाइजिंग कंसर्न में दिल्ली में, उसका संगीत
लॉय ने किया था। ओह, जो मैंने पहली एड फिल्म बनाई थी बॉम्बे आके, आई थिंक हीरो साइकिल्स की थी, जी। उसका संगीत एहसान ने किया था। जो शंकर ने पहला गाना गाया था एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, अच्छा। जो मैंने बनाई थी मामूली राम, वो मेरा फर्स्ट टाइम लॉन्ग था, वो शंकर का था। तो मेरा देयर वर 3 फर्स्ट ऑलरेडी, वी गो बैक 25-30 years। Now this is very challenging to decide 7 गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है। मेरे ख्याल से this is an album that is going to go down in the history of timeless beauty, क्योंकि every song, चाहे वो गुरबानी हो, स्लो मोशन अंग्रेजा, रंगरेज, oh my god, the title track जिंदा, and one of my favorites also, like you know there are some amazing tracks that are there. आपका फेवरेट कौन सा है बताएं? अभी माँ को नहीं पूछ सकते उसका कौन सा बच्चा उसका सबसे फेवरेट है। ये और बड़ा क्योंकि आप बहुत क्लोजली म्यूजिक के साथ बैठते हैं। या तो ये बहुत मीन सवाल है, इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है। बट आपने बैकिंग वोकल्स भी किए हैं गानों में। हैव यू डन बैकिंग वोकल्स इन द सॉन्ग एज वेल? इज इट ट्रू? ऐसा ना ही माने तो अच्छा है। मतलब हुए तो हैं कहीं। मैं अपनी आवाज खुद ही सुनता हूँ तो डर लगता है, और सुनेंगे तो भाग जाएंगे। देयर वाज अ मोमेंट इन द फिल्म कि मिल्खा सिंह के पैरों में स्पाइक्स पड़ गई थी, उनको जख्मी थे, पट्टियां बंधी हुई थी, और वो रेस दौड़ते हैं, वो नेशनल्स का सिलेक्शन है इंडिया टीम का, और वो चक्कर मारते हैं और पट्टियां खुलती हैं और खून बह रहा है, और वो पूरी जान लगा के, डॉक्टर कहता है अगर तुम भागे तो तुम इसके बाद कभी नहीं भाग पाओगे, तुम्हारी टांगे खराब हो जाएंगी, यू कैन नॉट, यू हैव टू रेस्ट फॉर 6 months। बट वो दौड़े और वो रेस जीते। उसमें एक 4 लाइन की गुरबानी है जो मेरी फेवरेट है, कि नानक नाम जहाज है, जो चढ़े तो उतरे पार। वाह वाह वाह। So a film that celebrates human spirit, the film that celebrates the legendary Flying Sikh. Did you think that Flying Sikh could have also been a name? Or were you sure कि भाग मिल्खा भाग ही रखना है? नहीं, मेरे को बहुत सजेशंस आए फ्लाइंग सिख के, बट आई वाज नॉट मेकिंग अ फिल्म ऑन द फ्लाइंग सिख। आई वाज मेकिंग अ फिल्म अबाउट दिस हेट्रेड the two countries have, which is India and Pakistan, and that has been exploited and created. अब आप एक दिन आप एक लाइन खींच दीजिए और बोलिए अब आप पाकिस्तान हो गया, आप हिंदुस्तान हो गया। तो वो जो था, वो जो घाव था, उसको अभी तक हम भर नहीं पाए हैं, दोनों देश फेल हो चुके हैं। तो द अटेम्प्ट वाज दैट, एंड बहुत कोशिशें हुई हैं, बहुत बड़े बड़े लीडरों ने बहुत कोशिश की है, बट फिर एक्सप्लॉइट भी हुई है समहाउ। बट मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, सालों में चीज़ें बदलेंगी, माहौल बदलेगा। Congratulations on 10 years of this beautiful film. I believe कई शहरों में इसका री-रिलीज भी होने वाला है। जी, so we कई मतलब 30 cities, 30 शहरों में 6 अगस्त को आने वाले इसका री रिलीज है। बट उसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ है जी, वो हमने डेफ एंड डम लोगों के लिए भी उसको सुसज्जित किया है, मतलब साइन लैंग्वेज भी एक बॉक्स में चलती रहेगी। क्या बात है। तो जो ये फिल्म को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी ऑफ हियरिंग, they would now be able to enjoy the film. Thank you so much. Thank you, Rom. And also special mention to Prasoon Joshi ji. Absolutely. मतलब उनके बगैर बोलते हैं ना कि जब एक सेंटेंस पूरा होता है तो पूर्ण विराम लगाए बगैर सेंटेंस खत्म नहीं होता, तो वो है। Celebrating 10 years of Bhaag Milkha Bhaag with Rakeysh Omprakash Mehra ji. आपके favorite moments, scenes कौन से रहे हमें ज़रूर बताएं। Thank you so much. I really enjoyed this interview. Thank you so much, ma'am. More to talk about, but अगले 10 साल बाद मिलेंगे, फिर बातें होगी। Stay tuned. Thank you guys for watching us on Bollywood Hungama. My name is Urmin. नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा में देख रहे हैं।